Okay, so good morning to all. So today again we are going to continue with the chapter that we were doing. We were discussing about web applications and security features. So today we'll start up with another topic under the same chapter. I'll just move on to the screen. Okay, here it is. So today we'll go do with the chapter Internet Security. Now, first of all, we should know what is Internet Security. It's a branch of computer security which is related to Internet and involving all sort of security features when we are accessing a browser. Plus, it also covers the network security part. So बेसिकली यहाँ पे हमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो कि इंटरनेट पे जब भी आप कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, उसको उससे आपको या उससे रिलेटेड जितने भी नेटवर्क या इंटरनेट थ्रेट्स हैं, हाउ डू यू पीपल विल प्रोटेक्ट योर सिस्टम्स फ्रॉम सच काइंड ऑफ थ्रेट्स, राइट? So plus it also works on the network security. Network and internet, these are two different things, as internet is from where we access all internet services and network is just connectivity of computers. So if you're using a network, in that case also we need some security so that any kind of uh, problem can be eradicated, it can be removed, right? Nowadays you'll find a lot of problems, like lot of frauds are being made or done, phishing is done. So इन सब चीज़ों से हमें कैसे बचना है वो इन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? Now internet although provides us lot of information, right, and it's a good source of entertainment, right? But it is full of online threats. So we should always be very careful while using our username and passwords whenever we are using certain online banking information, or whenever we are using some credit cards, debit cards to make some payment. So we should have has to be we should have to be very careful, because they are prone to attack, and they can be used by any unauthorized user for any kind of misuse of your information, right? सो ईमेल स्पूफिंग, फिशिंग, चैट स्पूफिंग, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इंटरनेट पे मिलती हैं। फिशिंग वगैरह में जैसे आपको मेल्स आती हैं दैट यू पीपल हैव वन some kind of money or a lottery ticket, you just give your details into it. तो अगर आप डिटेल्स देते हो तो वो उस डिटेल्स का मिसयूज करके आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं या आपके बैंक डिटेल्स को एक्सेस कर सकते हैं, राइट? तो ये चीज़ों से कैसे बचना है? Now, best practices में the very first thing we should know is whenever we are using a password, the password should be strong enough. It should always be combination of alphanumeric and special characters. Alphanumeric means where alphabets and numbers both are used. So your password should have a number, it should have an alphabet also, and it should also have certain special characters also, right? The reason of using all these things in combination is that it's very difficult to crack if we have these combinations. और अगर आप सिंपल सा कोई पासवर्ड रखते हो, जैसे कोई फ्रेंड का नाम या फिर your favorite color, your number, mobile numbers or bike number or your parents name, so these are the passwords which can be easily guessed by anybody, right? Especially the person who knows you, right? So ऐसे पासवर्ड हमने नहीं लगाने हैं, ठीक है? And moreover, we should always keep on changing our passwords frequently after 2 to 3 weeks. 2-3 हफ्ते के बाद अपना पासवर्ड चेंज करते रहो, right? That is also one healthy way of maintaining your password or securing your password. Always use a strong password, because if you are using a strong password, the password cannot be breached easily. And nowadays we have a feature on the website where whenever you create a password, it indicates you the strength of the password. As you can see here, there's an image given.
Now this is regarding Gmail account. Whenever you create an account in Gmail, वहाँ पे जब आप पासवर्ड सेट करते हो तो पासवर्ड के साथ में पासवर्ड की स्ट्रेंथ क्या है वो शो करता है. Now if you see here, it is a simple password with the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 in continuation. एक sequence में number डाल दिया password में. So this is a weak password because that can be easily guessed. In second case, a number is given and it is fair. It comes under fair category. Third case, again a number is given. Now it is in weak category. Why it is weak? Because it is 10-digit number, and 10-digit number can be a mobile number, right? The previous one, this one is a 9-digit number, और 9-digit mobile number नहीं हो सकता. Although सिर्फ numbers हैं, तो ये fair category में आ गए. अगर आप इन numbers के साथ में you put some characters, like here we have added a at the end, so this makes a strong password, right? So these are the things we should keep in mind while entering or creating a password. ये कुछ guidelines हैं, how do we make a strong password. Always keep the length of the password at least 12 to 14 characters. The password should be 12 to 14 characters long, right? Although nowadays whenever you create a site, create a account or a password in any of the sites, आपको minimum number of characters वहाँ लिखे हुए मिलेंगे. As you can see here, minimum of 8 characters in the length is given, that 8 characters कम से कम होने चाहिए. But you should always recommend 12 to 14 characters long password, right? Always use such kind of password जिनकी थोड़ी length इस range में हो. छोटे password जल्दी generally easily guess हो जाते हैं, right? Then avoid using passwords based on repetition or dictionary words or letters or number sequences, user names, relatives names, pet name. ये common नाम जो है, common word should not be used. जैसे ये आपके repetition वाले numbers हैं, number sequence है. So we should always avoid such kind of uh, passwords, right? Includes numbers and symbols in passwords and use capitals and lower case capital. This is also very healthy nowadays. आप जब कहीं पासवर्ड क्रिएट करते हो तो वहाँ पे कई जगह पे मैंडेटरी है that you have to use one letter as capital in or one letter as lower case in your password. एक कैपिटल लेटर रखना और एक लोअर केस रखना मैंडेटरी है, ठीक है? जैसे स्पेशली व्हेन यू गो विद द बैंक डिटेल्स, बैंक के लॉगिन आईडीज क्रिएट करोगे, वहाँ पे जब आप पासवर्ड रीसेट करते हो तो देयर स्पेशली यू हैव टू गिव वन कैपिटल, हैव टू गिव वन लोअर केस. यू कैन नॉट गिव एवरीथिंग इन कैपिटल और यू कैन नॉट गिव एवरीथिंग इन स्मॉल लेटर्स. आपको कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा, राइट? एंड वी शुड ऑलवेज अवॉइड सेम पासवर्ड फॉर मल्टीपल साइट्स. अगर मान लो आपका फेसबुक में भी अकाउंट है, ट्विटर पे भी है, और यू आर यूजिंग ईमेल ऑल्सो, जीमेल ऑल्सो, राइट? एंड moreover you have some bank online transaction details also, you have some bank account. तो आप सब पे कॉमन पासवर्ड कभी मत डालो. we should have different password for different sites. रीजन ये है कि अगर एक पासवर्ड भी आपका किसी ने एक्सेस कर लिया, अगर वो कॉमन है, तो जनरली हमारी हैबिट होती है कॉमन डालने की. तो वो कॉमन हुआ तो वो दैट कैन बी लाइक दे आर द पर्सन इज एबल टू access your Facebook account, right? So the password that you have entered in the Facebook account is the same password that you have entered in your internet banking. So that person can easily access your internet account also, your bank account also, online banking account. ठीक है? तो ये एक बड़ा important factor है that we should always have different passwords for different sites, right? Nowadays, see, these are some of the examples given over here. Like this is a strong password, right? Alphabets are there, numbers are there, and some characters are like colon is used. Here we have characters, group of characters, numbers and alphabets. These are some of the common given passwords which are very strong, right? So as I was discussing that there are some random password generator softwares nowadays available. Like there's a site given here, strongpasswordgenerator.com. Now this helps you to generate certain
strong passwords at random numbers. So you just log into the site, you'll get one random password from there. वो password आप use कर सकते हो as a password for your any login account, right? So this can be one way of getting the password. Although this is not also not healthy because जहाँ से आप password access कर रहे हो, जहाँ से password create कर रहे हो, वहाँ पे भी cookies वगैरह होंगी, वो files कहीं ना कहीं सेव हो रही होंगी. So that can also be accessed by some hacker or so. So you should always create a strong path. This is one option available to us, but we have some software, some online websites on where you can generate strong kind of password, right? Next thing is that we should always back up our data. Backup is important because whatever personal data you have on your computer or whatever bank or related data is there on your computers, always make a backup of it, a copy of it on some media. Like you can create a copy and store it in a pen drive or a disk you can create, or some external hard drive you can use for saving all such things. Now this could be helpful when you have some problem like loss of data. अगर आपका PC crash हो जाता है, if your PC is not working, some software is cracked, right, or accidentally your data is deleted from the system. So if you have a backup from वहाँ से हम सारा data वापस ला सकते हैं, right? But there is one more again very important thing that if you are creating such kind of backups, तो backup अपने जहाँ पे भी बनाया है, that backup media like that pen drive or a disk should be protected thoroughly. वो किसी के unauthorized user के हाथ लग गई तो आपका सारा डेटा जो है वो access हो जाएगा, right? So this is also important. Use encryption softwares. Encryption softwares are the softwares which converts your important data into a form that cannot be accessed directly, which cannot be read. Like if you have some word file, right? So now when you use an encryption software, that word file will be converted into a form that cannot be directly accessed, right? We are not able to read it. Like, it doesn't look like word file, but it is actually a word file. तो encryption software ऐसे करते हैं, किसी डेटा को या फाइल को एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं दो जो आप देखने में या एक्सेस करने में प्रॉब्लम आए, right? So people are not able to recognize and they are not able to access the data present in that particular file. उसको उसकी फॉर्म चेंज कर देनी, right? So this is also one way of protecting your files and folders and data. Now, keeping your username and passwords private. Now, never save your password on computers, right? Computers, especially those computers where things are being shared by many people. Like if you have internet cafe or you have a school lab, computer lab, IT lab. So never use or save your password somewhere in such kind of people, such kind of computers जहाँ पे बहुत लोग बैठते हैं, right? और moreover जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, ठीक है, तो आजकल क्या होता है कि रिमेंबर पासवर्ड के ऑप्शन आते हैं. तो रिमेंबर पासवर्ड पे जाने पे आपका पासवर्ड ऑटोमेटिकली रिमेंबर किया जाता है उस वेबसाइट के अंदर. तो वेन एवर यू लॉग इन नेक्स्ट टाइम तो आपको बार बार पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है. बट द थिंग इज इफ यू आर यूजिंग दिस सर्विस एट योर पर्सनल कंप्यूटर देन इट इज ओके बिकॉज वो सिर्फ आप ही एक्सेस कर रहे हो. बट if you are using such kind of option in a computer which is shared by many people, so there it is a problem, right? People can access your site, they can access your data, right? So keep your username and password private, don't give it to anybody, don't disclose it to anybody. Then is whenever we register ourselves to some website, जब भी हम किसी वेबसाइट में लॉगिन क्रिएट करते हैं, यो क्रिएट अ लॉगिन और अ पासवर्ड आप रजिस्टर करने की कोशिश करते हो, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसकी जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, तो प्राइवेसी स्टेटमेंट. काइंडली रीड दैट बिफोर रजिस्ट्रेशन. द रीजन इज दैट उसमें
कई तरह की ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो जिससे आपको पता लगता है कि आपकी इंफॉर्मेशन जो आप उसमें डाल रहे हो वो कहीं शेयर तो नहीं होगी, because it is written in the policy statements and policy privacy statements that if the website want to share your personal data to somebody, they are allowed to do it. ठीक है, and if you agree with that, then you cannot claim later on कि भाई आपका शेयर डेटा जो है कहीं शेयर किया गया वेबसाइट की तरफ से। तो ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हमें रजिस्टर करने से पहले जरूर पढ़ने चाहिए, right? And wherever you find such kind of problem where it is written that your personal data will be shared, so kindly don't register into those kind of sites, right? And always do not share your personal information. देखो जब हम रजिस्टर करते हैं उस टाइम पे हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है और वो हमें पहले पायरेसी डॉक्यूमेंट चेक करना चाहिए। अगर आपका साइट जो है ऑथराइज साइट है तो देन यू कैन फिल अप दैट पर्सनल इंफॉर्मेशन वंस, बट वंस यू आर रजिस्टर्ड उसके बाद कहीं पे भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जाती, राइट? सो प्लीज डोंट गिव एनी काइंड ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन एनीवेयर। लाइक कई बार आपको फॉर्म्स फिलअप करने को बोले जाते हैं रिसर्च डॉक्यूमेंट्स के लिए, वेरीफाई करने के लिए। सो if it is a trusted site, if you know that site is a trusted site, वो आप पहले भी यूज कर चुके हो या वो किसी ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करती है, then you can fill up that form, otherwise you should not do it, right? So that whatever detail you have filled up there वो कोई भी यूज कर सकता है, जैसे आपका ईमेल आईडी यूज करके फेक मेल्स वो क्रिएट कर सकता है, राइट? तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, थिंक thoroughly before giving your personal information. Then is secure transaction. Now this deals with online shopping and transaction. So whenever we are doing with this online shopping, जब हम online shopping करते हैं तो we generally give our credit because online shopping में payment involved होती है, so we give our credit card details or numbers and then debit card numbers or even account details into it. So इसमें that information can be tracked and used by any of the unauthorized person, ठीक है? ऐसे unauthorized person को हम hacker बोलते हैं, and they can misuse the information given by you people there. So इससे कैसे बचना है? Always ensure that the website you are accessing, it is a authorized and legitimate website, ठीक है? ऐसी वेबसाइट्स में जाके ऑनलाइन शॉपिंग करो या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करो जो ऑथराइज साइट्स हैं, वेल नोन साइट्स हैं, ठीक है? अगर आप कोई भी ऐसी अननोन वेबसाइट पे जाके कोई भी किसी भी तरह की ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करनी चाहिए, राइट? अब दूसरी चीज है, ये कैसे पता लगेगा कि ये वेबसाइट जो है वो ऑथराइज्ड है? हर वेबसाइट का एक डिजिटल सर्टिफिकेट होता है, राइट? डिजिटल सर्टिफिकेट, हाउ कैन यू सी दैट डिजिटल सर्टिफिकेट? आप जब भी ऊपर एड्रेस बार में देखोगे जहाँ पे हम लोग ईमेल एड्रेस सॉरी द वेबसाइट एड्रेस लिखते हैं, उसके जस्ट ऑन द राइट साइड ऑफ इट यू विल फाइंड अ स्मॉल काइंड ऑफ लॉक सिंबल. इट इज जनरली गोल्डन, इन केस और इन सम केसेस इट इज डिफरेंट कलर. तो लॉक सिंबल होता है. अगर वो लॉक सिंबल में दैट लॉक इज क्लोज्ड, that means your website is secure, the digital certificate is attached to that website. And if that lock is open, right, that symbol, lock symbol is open, this indicates there's no digital certificate attached to that website, and that website is not secure in that case. तो ये आपको ध्यान रखना है. I'll just show you once. मैं आपको दिखाता हूँ. As you can see, ये मेरा जीमेल अकाउंट है. ऊपर देखिए यहाँ पे जीमेल जहाँ लिखा है उसके साथ में you'll find a small lock. Now this lock is basically shows that this website is secure. अगर ये lock open है, if this lock is open, in that case this that particular website is insecure, उसका digital certificate उसके साथ attached नहीं है. When you click this, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी.
इसका सर्टिफिकेट क्या है, दिस इज द डिजिटल सर्टिफिकेट एंड इट इज रिटन, इट इज वैलिड. ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन check whether the site is okay, so whether the site is authorized or legitimate site or not. Coming to next thing, always use antivirus, anti-spyware softwares. Now we know that computers, they are prone to attacks, and these attacks are called as malwares, and they comes in various forms. एक ये लिखा है logger भी एक तरह का प्रॉब्लम है. It's a kind of program that can be installed in your computers, and it generally tracks the number of keys that you have pressed from the keyboard, or it also tracks the which all keys you have pressed on the keyboard. तो ये कीबोर्ड पे आपने कौन कौन सी कीज को प्रेस किया है उसका ट्रैक बनाता है, and that information can be passed by this software, this program, to the person who has sent this. ठीक है, तो आपने जो जो कीज प्रेस की हैं उसकी डिटेल उस पर्सन के पास जाएगी जिसने ये की लॉगर सॉफ्टवेयर भेजा है, right? And that person can misuse those details. See, whenever you log in, तो आपने जो जो कीज प्रेस की हैं वो लॉगिन आईडी या लॉगिन पासवर्ड जो है उस पर्सन को मिल जाएगा. They can track those information from your track that password from your information, right? So to block all such kind of problems, we should always use certain softwares like antivirus and anti-spywares, right? And these kind of softwares are the softwares which protects your system from any kind of virus attack or any kind of spyware attack, right? Spyware is the same thing कि जो कोई unauthorized person आपके account या details को, if they try to hack your accounts and details, such kind of things is called as anti-spyware. Spywares, and we need an anti-spyware program or a software to protect your system from that, right? And one more important thing is that whenever we are using antivirus or anti-spyware software, we should always update them, because उसमें latest information we should always keep on adding. ठीक है, जब आप एंटीवायरस या एंटी स्पाईवेयर्स को अपडेट करते हो तो जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी इन वायरसेस के बारे में या इन स्पाईवेयर्स के बारे में, that will be added to your software, because software carries a database जिसमें हर तरह के वायरस प्रॉब्लम्स की डिटेल्स होती हैं. तो अगर आप अपडेट करोगे तो लेटेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन नेट पे अवेलेबल है वो भी ऐड हो जाती है. ठीक है, तो जो भी लेटेस्ट वायरस मार्केट में आए होंगे those can also be tracked, right? Now when we are getting or using an ईमेल में हमारे पास बहुत सारी ऐसी मेल्स आती हैं जो अननोन यूजर्स की होती हैं, राइट? Especially I was talking about phishing before. Now phishing is you get a mail like you won some lottery, or there's an mail that you've got a job somewhere, so kindly give your details, kindly give your bank details. So ऐसी चीज़ों को अवॉइड करो, right? Because generally they are fraud, right? Most of the cases they are fraud. Or we should not give our bank details and your personal details to any kind of such kind of thing. So whenever you feel that this mail is not from the known person or it is from unknown user, so we should not open it, first of all. And if you even if you open it, then there must be some attachments into it. Please don't click on any of the attachment, or please don't open such kind of attachments, because whenever you open it, there may be some virus or some other malware attached to that particular attachment. वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएंगे. ठीक है, तो आपको ऐसे मेल्स को पहले तो ओपन ही नहीं करना चाहिए. अगर ओपन किया भी है तो उसके बाद कहीं भी अटैचमेंट्स को क्लिक नहीं करना. ठीक है, so always be careful with this. Then clear the cookies from your browsers. तो जिस भी ब्राउजर में हम लोग नेट यूज कर रहे हैं उस ब्राउजर में होता क्या है कि समटाइम्स लाइक इफ यू लॉग इन विद योर डिटेल्स, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, लेटर ऑन यू फाइंड दैट भाई मुझे बार बार पासवर्ड डालना पड़ता है, तो वहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड, सॉरी फॉरगेट बोल रहा हूँ, you'll get an option there that it will save your password automatically
राइट. तो रिमेंबर पासवर्ड का ऑप्शन आएगा. Now if you click that remember password option, what will happen that whenever you try to log in next time, तो अगली बार जब आप लॉग इन करोगे तो that time you don't have to give a password, right? आपको दोबारा पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपका पासवर्ड वहाँ ऑलरेडी सेव्ड है, राइट. So how this password, where that password is saved, it is saved in these cookie files, right? And sometimes we go with shopping sites, you fill up your details in the shopping site. वो डिटेल्स भी ऐसी कुकी फाइल्स में सेव हो जाती हैं. जो भी पेज आपने विजिट किए हैं वो डिटेल्स भी कुकी फाइल्स में सेव हो जाती हैं. Now in case this cookie file is tracked by somebody, right, it is automatically traced by somebody, तो फिर आपका ये डिटेल अकाउंट डिटेल्स को कोई भी हैक कर सकता है. So it's always healthy to clear all these cookies and these temporary files after you are used your browser, right? So ये एक अच्छा ऑप्शन है, हमें cookies को clear करना चाहिए. We should always keep our operating system and the softwares that we are using. We should always update them. अपडेट करने का मतलब यह है कि इन केस कहीं भी कोई सिक्योरिटी लूप होल है, कोई प्रॉब्लम है, so that problem can be misused by any of the hackers. So we should always update our operating system or software so that such kind of problems, जो भी problem areas हैं, उनको हम overcome कर सकें, right? So software when updated, so such any kind of problem is there, if it is there in that security loophole is there in that software, वो जब हम अपडेट करेंगे वो सारी चीजें ओवरकम हो जाती हैं और रिमूव हो जाती हैं, ठीक है. So we should know. Then install a firewall. So firewall basically works when we are connected to some network. जब आपका कंप्यूटर किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है तब फायरवॉल यूज किया जाता है, राइट. Firewall basically analyze the network traffic. Analyzing the network traffic means whatever is entering into the network. जब भी किसी नेटवर्क में अंदर कोई भी डेटा आ रहा है या वी आर ट्रांसमिटिंग इट टू समथिंग, तो जो भी anything which is entered into the network is thoroughly checked by the firewalls, and if they find the traffic is okay, only then those kind of files are allowed to enter the network, otherwise they are not allowed, ठीक है. तो ये फायरवॉल ऐसे सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर होते हैं जो नेटवर्क ट्रैफिक को दे कीप ऑन एनालाइजिंग, नेटवर्क के अंदर जो कुछ भी ट्रांसमिशन हो रही है उसको ट्रैक करते हैं, ठीक है. एंड इफ दे फाइंड सच काइंड ऑफ थिंग्स इज okay, and only then is allowed, otherwise they are not allowed. And these firewalls comes in two forms, software also, as well as hardware. Software is the part installed inside the system, and hardware is some dedicated computer which works as a firewall, ठीक है. आजकल जितने आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उनमें वन सच फायरवॉल सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑलरेडी, राइट. वी जस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर इट, उसको हमें ओके करना पड़ता है, अदरवाइज सब ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से प्री इंस्टॉल्ड आता है. Then is never install software from unknown resources. Like जैसे PDF फाइल है, मुझे PDF रीडर इंस्टॉल करना है. So the best way is we should always go to Adobe organization's website. From there we should download because वो उनका trusted जो original site है. अगर हम किसी और सोर्स में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, you can download, but the thing is once you download it may have some virus files also, right? So इन चीज़ों से बचना चाहिए. So always go to some trusted site, and if you know that that website is trusted and well known and reputed, only then you should download it from there, right? Otherwise it should not be, the file should not be downloaded, the software should not be downloaded, right? And it is always healthy to remove any kind of unwanted or unknown software applications installed in your computers. आपको कंट्रोल पैनल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एप्स मिलेगी, तो एप्स में जाके आपको विल फाइंड अ लिस्ट ऑफ ऑल द एप्स एंड ऑल द एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर. उन सब लिस्ट में से आप
चेक करो, जो भी आपको लगता है कि सच सॉफ्टवेयर इज unnecessary and it is not being used from very long time, such software should be removed. ठीक है, तो बिकॉज हमने क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर बंडल्स होते हैं विच दे गेट इंस्टॉल्ड ऑटोमेटिकली, टूल बार्स दे आर गेट इंस्टॉल्ड ऑटोमेटिकली, सो वी नीड टू रिमूव सच काइंड ऑफ थिंग बिकॉज उसमें फिशिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उसमें वायरस के चांसेस ज़्यादा हैं, स्पाईवेयर के चांसेस बहुत हैं. ठीक है, तो प्रोटेक्ट योर सिस्टम फ्रॉम सच प्रॉब्लम्स यू शुड ऑलवेज डू दिस, राइट. Now coming to clearing data stored in the browsers. Now this example is about Mozilla Firefox. Now in Mozilla Firefox, there's an option called as tools. उसके अंदर options होगा. When you click on the options, this window will open up. यहाँ पे एक security tab है. In the security tab, we have options to remember password for sites. Now, if there is a tick over here, that means this option is selected. That means if whenever passwords are entered to any of the sites, they are automatically remembered. And once they are remembered, they'll form one cookie file. ठीक है, तो अगर आपको ये ऑप्शन क्लोज करना है, you just click on this tick. So it will be the selection will be removed. Once the selection is removed, तो वो कभी भी आपके पासवर्ड्स को सेव नहीं करेगा. ठीक है. And if you go with the journal tab on the top, now here you can clear all kind of cookies and visited page or web pages data or browsing history etc. तो browsing history या cookies को हम लोग यहाँ से clear कर सकते हैं. ठीक है, so it's there in the journal tab. ये जो मैं option दिखा रहा हूँ, these are from the older version of Mozilla. जो नया वर्जन है उसमें सारी चीज़ें they are all at one place in a form of a list. You go and you'll find the settings. You'll simply go to the settings part of the browser. You get everything there. ठीक है. Plus we have some piracy settings. Piracy मतलब उसमें वही है, history remember करनी है या नहीं करनी है, तो that option we can select. ये history का option है piracy के अंदर. Remember history, never remember history. If you click on remember history, तो whatever things you have visited, उन सबको वो याद करके एक फाइल में सेव करके रखेगा. अगर आप never करोगे तो nothing will be saved, right? So custom settings में we can choose the things like if you want to remember my browsing and downloading history only, so you should select the first option. Remember the searching part or history related to searching you have done, or tick this option, select this option. Or if you want to accept the cookies only, so tick this option. And if you want to accept all, you can click on all the options, right? So this is how we can give. और एक preferences option होता है, उसमें प्रेफरेंसेस में हम लोग वही नेवर रिमेंबर हिस्ट्री के ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं. क्लियर ऑल करंट हिस्ट्री ऑप्शन यू कैन सेलेक्ट. So with this, whatever cookies and histories and other things which are installed in the system, they are all cleared, all removed. ठीक है. So that's it from this chapter. I think there's nothing left now. So go through the things that we have covered up. Just I have shared the PDF already. People, you must be having the new books also. So go through the things. If you find any kind of trouble, if you find any kind of problem, so in that case we'll discuss next time. So always, but you have to go through it at least. I'll share some homework to you people today itself by evening. So kindly do those few questions that we have discussed today. Fine. और homework जरूर forward करा करो because I'm maintaining a record of it. Fine. So that's all from my side today. So I'll end up here now. Okay then, huh? Goodbye.